Dear students, I am Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, Ajmer. Today's topic of discussion is nature of sales management. As we have already studied meaning of sales management as well as definitions of sales management. Now today I am taking nature of sales management. The basic function and role of selling is to generate sales and earn revenue for an organization. Today's selling approach also highlights good customer relationship, managing the profitability of a firm, managing customer complaints, and building brand value in the eyes of the customers. So we can say the nature of sales management can be according to the following points. Number one we can take is strategic function. It means sales management achieves personal selling objectives through personal selling strategies. Strategies means व्यू रचनाएं, हिंदी में व्यू रचना बोलेंगे. तो स्ट्रेटेजिक फंक्शन का मीनिंग है कि सेल्स मैनेजमेंट हमेशा पर्सनल सेलिंग के ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू पर्सनल सेलिंग स्ट्रेटजीज बना सकता है. सेकेंड थिंग वी कैन टेक इज कंज्यूमर वेलफेयर. उपभोक्ता का कल्याण किस प्रकार किया जा सकता है, तो उसके लिए भी हम स्कोप देखते हैं सेल्स मैनेजमेंट का कि इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू सेल्फ सेंटर्ड कॉरपोरेट गोल्स. केवल स्वयं तक ही केंद्रित नहीं हो सकता है प्रॉफिट का केंद्र, बल्कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन और इवन सस्टेन्ड ग्रोथ, बट इट गोज़ वेल बियॉन्ड टूवर्ड्स कंज्यूमर वेलफेयर, सेटिस्फैक्शन, डिलाइट एंड मैक्सिमम सोशल एडवांटेज by making the goods and services available to needy customers. जिन कस्टमर को ज़रूरत है वहाँ तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुँच जाए, ये सबसे बड़ा इसका काम हो सकता है. थर्ड पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. मानव संसाधन का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, तो उसके लिए बून एंड कर्ट्ज ने एक लाइन लिखी है कि सेल्स मैनेजमेंट एफर्ट में बी एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ securing, maintaining, motivating, supervising, evaluating and controlling an effective sales force. Thus, the modern concept of sales management revolves around the development of manpower. Manpower means it may be the employees of the company, it may be the higher authorities of the company, as well as the persons who are working at the lower level of management. Next nature of sales management we can describe is customers oriented. ग्राहकों से संबंधित हो सकता है या केंद्रित हो सकता है. तो जब भी हम सेल्स मैनेजमेंट की बात करते हैं वो कस्टमर ओरिएंटेड होगा ही, क्योंकि सेल्स किसको किया जाएगा, कस्टमर को किया जाएगा. तो इन दैट सेंस सेल्स मैनेजमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कस्टमर ओरिएंटेड, which produces what is needed by the customers for maximum social welfare. Nowadays you can take the example of after sales services also, because when we take sales management it is related with the marketing also. So the main emphasis of marketing is to maximize the satisfaction of the customer. Next is specialized function. Sales management is the special branch of general management. As we all know that there may be various branches of general management, and sales management is also one of the major branch of general management. It is one of the highly specialized function of general management. In this management we can take example of various functions of general management which can be included in sales management also, like planning, organizing, directing and controlling. Next is role of salesman. सेल्समैन का भी भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है. सेल्स मैनेजर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट किस में करेंगे, डिसीजन मेकिंग में. जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड डिसीजन लेना सेल्स मैनेजर का काम हो सकता है. मार्केटिंग चैनल उसे कौन से यूज़ करने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ क्या बनानी है, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, और भी कई सारे प्रमोशन के मेथड्स को देखने का काम सेल्समैन का हो सकता है. इसी तरह से कंडिफ एंड स्टिलगवनी ने ये कहा है कि द सेल्स मैनेजर इज़ बोथ एन एडमिनिस्ट्रेटर इन चार्ज
of personal selling activities and a member of the executive group that makes marketing decisions of all types. Then we can take functional area. When we talk about sales management, it represents one of the most important functional area of management. It also represents all the principles of general management such as planning, organizing, directing, motivation and control applied to sales activities and sales force for securing better business performance and reasonable priorities through sales also. Next is responsible. Sales management is an important and responsible part of marketing function. It is also responsible for the effective functioning of personal selling activities. Sales managers are responsible for participating in the preparation of information critical to the making of key marketing decisions, such as those on लाइक बजट हो सकता है, कोटा हो सकता है, टेरिटरीज हो सकता है. तो कहने का मीनिंग है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेल्स मैनेजर की यहाँ पर बढ़ जाती है. सो स्टूडेंट्स, दीज वर द मेजर पॉइंट्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट. अनदर we can take is subsystem of marketing. It is considered as the subsystem of marketing. It may be synonyms with marketing management, challenging profession. Nowadays sales management is considered as a challenging profession. Then goals. The objective of sales management includes achieving sales results, giving major contribution to profits and experiencing continuous growth. So it was the nature of sales management. Now in next lecture we'll continue with role of sales management.